Guys, this is Riddhi. So in this video I'll tell you about the placement procedure of Informatica. Informatica is a very good company. It is a product based company. So for this उसके experience share करने के लिए I have someone called Avnish Singh. He would be sharing his interview experience for that company. So without wasting much time, we can go and let us see what he speaks. So, hi Avnish, thanks a lot for joining. Hello, Riddhi. Thank you for giving me this opportunity. Yeah, so Avnash, can we start from a formal introduction? तुम अपने बारे में कुछ बताओ. Yeah, so as you know, my full name is Avnish Kumar, and I'm doing BTech from Technomill Salt Lake, Kolkata. So currently I'm in 8th semester and I'm from CSE. Oh, so okay. Apart from this, my hobbies are coding. Yeah, coding obviously this will be obvious for a CSE guy. So apart from this technical thing, my hobbies are cooking, biking, and yeah. Okay. So which company are you placed in, Avnish? So I'm currently placed in Informatica. So let me tell you about something Informatica is a product-based company, and it is a B2B company. So it delivers some business partners to its products. Okay. Yeah. Okay. So when did you got placed there? So the company, this was the first company which came to my college. So it came around in 7th or 8th May last year. So 2019. Oh, great, great. So for 1 year approx, you are working there. No, actually they hired all the interns on the 7th or 8th May, and we joined there in 12th of August, like in August. So it's been approx 10 months. Oh, means अब 1 साल होने को ही है. Yeah. So Avnish, what was your CGPA जब तुम actually में उस company में apply किए या फिर तो when you went for that company in your campus? Okay, that time my CGPA was 8.7. जब कंपनी आई थी तो उन्होंने कट ऑफ डाला था 8.5. वो कंपनी की कट ऑफ नहीं थी, वो कंपनी एक्चुअली में एक पूल कैंपस के लिए आई थी. जो पूरा ग्रुप है उसमें मेरा कॉलेज आता है, तो इसलिए वो मेरे कॉलेज से टॉप 20 स्टूडेंट को लेने वाली थी. That's why the cutoff went to 8.5. So that time my CGPA was 8.7. Oh, okay. So Avnish, what was the package offered? So this company offered 11.5, and the post offer was software developer post in R&D sector. Oh, okay, nice. So then can you just brief us through all the rounds which happened in that selection process? Yeah, okay. So actually we were 300 students. So Okay. first round was elimination round. So that was of MCQ round. So उस round में MCQ थी, like 30 MCQs थी total, and all the MCQ were from our syllabus, like OA operating system and DBMS and other things, like no FT. There were no FT for that. Okay, only the core subjects. Yeah, only the core subjects. So there were 30 questions, so they have to select like 70 or 80 students. So that's why the cutoff went for 15. So 15 क्वेश्चन बनाने पे कट ऑफ लाइक आप क्रॉस कर जाते हैं. तो आफ्टर द एप्टी राउंड टोटल 70 और 80 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, एंड आफ्टर द एप्टी वी वेंट फॉर अ कोडिंग. So in coding round there were 4 questions and 1.5 hour time. And coding round is done on like CoQ platform. So there was a platform like CoQ. अच्छा. So प्रॉब्लम कोकी प्लेटफॉर्म की भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो वो नेट पे पता चल जाएगा. आप फंक्शन डिक्लेयर नहीं कर सकते हो वैसा. हाँ, so डिक्लेयर्ड होते हैं, उसमें लिखना रहता है. हाँ, so there were total 4 questions. हाँ. So 2 are very easy, 2 are of 10 marks and 2 are of 15 marks. Okay. 2 question थी डायनेमिक प्रोग्रामिंग से. So yeah, so मेरा एक्चुअली चारों क्वेश्चन 1 आवर में हो गया था सबसे पहले. तो जिनका वो जो कोर सब्जेक्ट का तुमने बताया MCQ राउंड था, those who cleared that round they only went for the coding round. Yes. And that's why that was elimination round. Okay, so these were the 2 rounds, 2 of the starting round. Okay. Yeah.
So after the coding round, there were 20 students got selected Okay. for the next process. So that was selection round. So there was just now the main thing got started. So वहाँ से ही सब कुछ important था. So like first we have to go through technical round. So there were technical rounds are basically depends on the student, like how the student is performing. Because based on that, the number of technical round will be increased. So actually मेरे लिए मैंने बस एक ही टेक्निकल राउंड दिया था एंड बाकी जो मेरे क्लासमेट्स थे तो बहुत का 2 से 3 राउंड टेक्निकल राउंड तक गया था. So I can tell you some questions in the technical round. So how it went. Yeah, sure. Yeah. So technical round. The first question was actually first question was from my resume. So I did an internship in one company. So they asked me what was my role. So I started explaining like मैंने क्या किया था और कैसे वो internship हुआ था. तो उन्होंने लाइक वो इंटर्नशिप में मैंने मेंशन किया कि मैंने Node.js पे काम किया था. देन दे आर स्टार्टिंग क्वेश्चनिंग फ्रॉम Node.js लाइक व्हाट इज दिस, व्हाट इज Node.js, व्हाट इज यूज ऑफ दिस, व्हाट इज दिस बेनिफिट एंड ऑल Okay. देन उसके बाद उन्होंने सम ट्रिकी क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पोस्ट एंड गेट, पोस्ट एंड पुट. So this was some tricky question like and after this they started asking the coding questions. अच्छा. तो उन्होंने पहले कोडिंग क्वेश्चन दिया फिबोनाची सीरीज का. सो दैट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन बट दे मेड इट harder because they want me to write it in optimized time, optimized with the space and also the lines, like number of lines should be minimum. And there were so many questions. I will share the link to you. So Okay, no problem. Yeah, so for the coding questions which you told they have asked, they told you to write the snippet or vocally they asked? no, they told me to write the snippets in the paper. Oh, okay, ठीक है. So you went for the only one technical round and others went for 2 or 3 technical rounds. Yeah, actually most of my interview is done by my CV because I filled my CV with so many things. So Okay. that was just they asked me, is this true, or, and they verified like. And let me tell you one thing. As I mentioned in CV, like I secured global rank 1 in CodeSafe. So they Okay. asked me, is it true? So I told them verify it. There's a link. So they verified it, and Yeah. similarly they asked so many things from my CV and verified it. So Okay. या सो मतलब ये इंटरव्यूअर और उनके पैनल पे डिपेंड करता है एंड प्लस योर रेज्यूमे कि आप कैसे बनाए हो एंड कितना आप इंटरव्यू पूरा लाइक पूरा फॉर्मल नहीं होता है. लाइक वो लाइक इन्फॉर्मेटिका इज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. या तो इसका जितना भी इंटरव्यू होता है वो बस आपसे इससे मतलब नहीं है कि आप टेस्ट कैसे हो. बस आपका बस देखते हैं आपका नॉलेज कैसा, लाइक आप किसी चीज को कैसे कैच कर लो. लाइक कुछ क्वेश्चन थी जिसमें वो मुझे बनाने बोल रहे थे और ऑप्टिमाइज लिखने बोल रहे थे. एक क्वेश्चन था तो मैं ऑप्टिमाइज नहीं कर पा रहा था. उन्होंने जस्ट हिंट्स दिया कि ऐसे कर सकते हो और उन्होंने फिर लाइक 15 to 20 मिनट्स टाइम दी थी. तो आफ्टर दैट आई कैन सॉल्व. ठीक है. तो उसके बाद देन एनी अदर राउंड, एचआर राउंड? Yeah, after the technical round, we went for managerial round. तो एक राउंड थी उसमें जो पैनलिस्ट थे उस टाइम पता नहीं था मेरे को कि वो मैनेजर है. लाइक आफ्टर कंपनी में जाने के बाद मेरे को पता चला कि वो किसी टीम के मैनेजर है. दैट्स व्हाई दैट वाज मैनेजरियल राउंड. ओके. So in managerial round, they were asking some tricky question like if I can manage those or not. Like they asked me like in my CV Java was not mentioned, so they asked me why the Java is not mentioned. So I told I didn't like Java, so I'm not so much comfortable with Java. So they asked me like in company if you have to work on Java, then will you work? So so that type of questions, tricky questions were there. Which language did you choose? Since you told that you didn't like Java, so which language? CPP, JavaScript, Python, C, and other Okay. except Java, everything. Yeah, because many of the students I know that they don't like Java, they went always go for C or C++. Yes. या सो ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं था ना, बायसनेस नहीं था किसी लैंग्वेज के? नहीं, किसी भी लैंग्वेज पे बायसनेस नहीं थी. लाइक अगर किसी को जावा आता है तो उसका पैनलिस्ट बस उससे जावा से ही क्वेश्चन. बस ये होना चाहिए कि आपको जो भी लैंग्वेज आती है वो आपको उस पर पूरी कमांड होनी चाहिए. लाइक किसी में कुछ फ्रेंड्स थे जिनको जावा आता था तो उनसे जावा में बहुत डीप क्वेश्चन पूछी गई थी. लाइक हैश मैप
जावा में शायद कि हाँ हैश मैप कैसे काम करती है, एरर लिस्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइक कुछ डीप ट्रिकी क्वेश्चंस का कांसेप्ट क्लियर होनी चाहिए. अच्छा. एंड फॉर द मीन्स व्हाट यू टोल्ड अर्लियर दैट की कोडिंग राउंड था, तो कोडिंग राउंड में ऑप्शन में कौन कौन से लैंग्वेजेस थे, तुम्हें याद है? पाइथन नहीं था, सी सीपीपी एंड जावा, जस्ट these three languages. There was no Python. Yes, because the company has no open Python. Like आप कंपनी जाने के बाद मेरे को पता चला पाइथन कंपनी में कहीं भी नहीं है. It's depend on the company. अच्छा अच्छा, ठीक है. So now the next round was HR round or? Yeah, last round was HR round, but HR round was not just any like it was not related to your selection. It was just to like know about you. So they just asked me about my family, where I live, and like my personal details, like what my father did, father do, everything. So you are not just based upon the answers in the HR round. वो बस. HR round are only for the selected candidates. Oh, okay, okay. So in which location are you placed in, Avnish? So I'm currently working in Hyderabad. So Informatica has 2 offices for developers, one in Bangalore and one in Hyderabad. So Achha. these 2 places where Informatica has R&D sector. So I'm currently working in Hyderabad. So coming to an end, Avinash, what you will suggest for the other candidates who would be preparing for actually this company? अगर इसी company को focus किया जाए तो? अगर इस कंपनी को फोकस करना है तो मेन थिंग इज जावा, बिकॉज अभी कंपनी के जाने के बाद पता चला कि उसमें जावा बहुत इंपॉर्टेंट. लाइक अभी भी मेरे को जावा सीखना पड़ा है. मोस्ट ऑफ माय वर्क इज ऑन जावा. So Java is very important for this company. अच्छा. And other than Java, you should be very good in coding. Yeah. So without coding, you can't, like most of my friends which are very good in everything, but not in coding. Like the concept were very clear, but they didn't good in coding. अच्छा. So you should be good in coding to clear the coding round, because coding round was not so easy. And yeah, CGP matters. अच्छा. मोस्टली क्वेश्चन गीक फॉर गीक से ही आती है. तो इफ अगर आप गीक फॉर गीक से प्रिपरेशन कर रहे हो दैट विल बी एनफ. तो एक डीपी की जो क्वेश्चन थी वो थी यू हैव टू फाइंड द मैक्सिमम सम ऑफ एलिमेंट्स, मैक्सिमम सम ऑफ सीक्वेंस, बट द कंडीशन इज दिस नो नंबर शुड बी एडजेसेंट. So this was the one DP question, and one question was you have to find the position of a string in the dictionary, in dictionary order, like what will be its position. Okay. ठीक है. You can share me the doc file or whatever if you have. Then I'll just mention it there. Okay. Yeah. So thanks, Avnish. Thanks for sharing your experience. It would be very helpful for others. Yeah. Thanks. Yeah. Thank you. सो देखा आपने. आई होप कि जो भी अवनीश ने आपको बताया हो आपको समझ में आया हो, एंड आई होप यू लाइक इट. एंड इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेरीज देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. वहाँ पे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगी, सारा आंसर्स बताऊंगी, सारा रिप्लाई दूंगी. but for that you have to comment and also like and subscribe my channel, because this will motivate me कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो. बिकॉज मैं ये सब वीडियोस आप लोग के लिए ही बना रही हूँ, आप लोग को हेल्प करने के लिए बना रही हूँ. तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. या बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट.